Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn about pipeline, PowerShell pipelines, the magic of pipelines in our PowerShell module 9. In this video guys, we are going to cover what is pipeline, understanding of pipeline, services in the pipeline, processes in the pipeline, and difference between write object and write host. तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइपलाइन क्यों जरूरी है, क्या होती है, समझेंगे पाइपलाइन की कैसे यूजेस हो सकते हैं, सर्विसेज के साथ कैसे काम कर सकते हैं, प्रोसेसेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस है राइट ऑब्जेक्ट और राइट होस्ट के बारे में. Let me tell you why pipeline is important and how it works. Suppose I run a command like ps or a get process. So whenever I run this command, it provide me output in a console, or you can save that output into a file. And when we call it a concept, call it that's a grep, Linux people might be aware of it. In this process we pull information from this file and then using to the another command, and the output comes in another different command you can save into the another file. And at the end you run a command like a kill process, something like that, using the output of this file. So this is the concept of pipeline, how pipeline works. Suppose you run a command like ps, it providing you certain information like PID number, the process ID number, and name of the service, and responding is it running or not, is it true or not. So I want to kill any process of this like LSA SS. So this way first I need to command get process and then this output using and to the another command, and then I can kill the process. Let me explain you in the other slide in a better way. So guys, we already seen how the pipeline works logically. Let me give you example in a commands. Let me type a command like get services and put a pipeline here and type where object. You might be aware that everything in a PowerShell is an object. तो हम एक कमांड हैंड्स ऑन कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले कमांड चलाई, फिर पाइपलाइन, एंड देन एंड मेंशन अ फिल्टर trying to filter out the data for the where object command and apply this equal to running bracket close and then another pipeline and format list, right? सो आपने देखा इस कमांड में क्या क्या किया हमने. इसको ऊपर लेके आते हैं. तो इसमें सबसे पहले कमांड थी गेट सर्विस, फिर हमने पाइपलाइन लगाया, फिर फिल्टर किए ऑब्जेक्ट्स को कि जो सर्विसेज रनिंग स्टेट में हो सिर्फ वो ही डेटा नजर आए. तो ये दो पाइपलाइन था, लेकिन इसको आपने देखा कि कैसे हमने आउटपुट को रिफाइन किया और फॉर्मेट लिस्ट में दिखाया कि हाँ हमें जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट चाहिए. लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि हमने इसमें कोई भी आउटपुट के लिए नहीं दिया. इफ आई रन अ गेट सर्विस कमांड, it's providing me a data like this. Okay, what we call it this output, मतलब इस output format को क्या कहते हैं. Let me type help and see another better way. It's called it out default. Let's run the command get process and put a pipeline and then out default. The output is remains same. So that is a default output. If you run any command, it providing you output in a out default format, or you can say using with the out default parameter. There's a multiple way to see the output, but this is the default option I want to tell you. And but there are some members as well. So whenever you want to see detail of any command, or you can see the property of any command, मतलब अगर आपको किसी command की सारी properties जाननी हो तो आप उस commands के members को जानिए. सबसे पहले get
member. ठीक है, और let's enter. So these all are the member of get service command. It's a name, close, equal, executive command. You can say status, start type, service type. These all are the member. You can use these member into the command or in a any script if you are working to the script. Let me help you more on this. If I type like a help and service, चलिए थोड़ा सा और हेल्प को एक्सप्लोर करते हैं और सर्विस से रिलेटेड जितने भी कमांड हैं उनको देखते हैं. So these all are the command: restart service, resume service, set service, start service, stop service, suspend service. These all are related to a service related commands. You can see with this command. And if let me use this command in another example to explain you a pipeline. Get service pipeline where hyphen object dollar underscore to status hyphen equal to, and I want this time I want to spot stopped services. Okay, another pipeline set service, this time I using start type. Okay, start type disabled what if. सो आप इस कमांड को ध्यान से देखिए. इसमें सबसे पहले मैं कमांड यूज करी गेट सर्विस, फिर पाइपलाइन लगाए, फिर वेयर ऑब्जेक्ट से मैंने फिल्टर किया उन सर्विसेज को जो इस टाइम पे स्टॉप है, फिर मैंने एक और पाइपलाइन लगाया और उन सर्विसेज को मतलब आइडेंटिफाई किया जो कि डिसेबल्ड स्टार्टअप टाइप जिनका डिसेबल्ड है. ठीक है, लेकिन मैं अभी इस कमांड को रन नहीं करना चाहता, तो एट द एंड मैंने कौन सा पैरामीटर यूज किया, व्हाट इफ पैरामीटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिफोर टू एग्जीक्यूट द कमांड, इट विल टेल यू व्हाट विल हैपन. लेट मी शो यू. What is wrong in this command? Something is wrong. Get service where object status is equal to control C. We have not, अभी तक हमने इस कमांड को क्लोज नहीं किया है. ठीक है, let me type it again, or I can just copy and paste it from the here. What is missing? What the missing is a bracket. Okay, let's enter now. Oh, there's a command, there's no command with the start type. It's a command name is start up type. Okay, so if I run this command without what if, it will stop all these services which are, you can see their name, and change their startup type to disabled. First it identify which services are stopped and then set it to startup type as a disabled, so they will never be automatically start in a service console. तो ये कमांड क्या करती, ये पहले फाइंड करती जितने भी सर्विसेज हैं जो स्टॉप मोड में है उनके स्टार्टअप टाइप को चेंज करके डिसेबल्ड कर देती. अगर ऑलरेडी डिसेबल्ड होते तो डिसेबल्ड रहने देती, बट अगर नहीं होता तो उनको भी डिसेबल्ड में कन्वर्ट कर देती. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. ठीक है, इसमें हम सेट की जगह स्टार्ट सर्विस को यूज करते हैं. यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, बाकी सब रहने देते हैं. कौन इतना बड़ा टाइप करेगा. सो स्टार्ट सर्विस व्हाट if I run this command, so first this identify which services are stopped and try to start them.
But if I already applied what if, तो it will not execute, it will tell me only what could be happen. अगर मैंने what if लगा रखा है तो ये command execute नहीं होगी, ये मुझे बताएगी कि इसका impact क्या होगा. See, Windows search, service could start. These all are the services are stopped and it could start. Let's move and see about the same impact in a process. Like if I run a command get process, uh, pipeline stop process, what if this command could pull all process information and then stop them if I do not put what if parameter. So telling me these are the processes running and that could be stopped. मतलब इसने मुझे बताया इस सर्विस ने कि ये सारे जो प्रोसेसेस हैं चल रहे हैं, अगर मैं what if पैरामीटर नहीं लगाता तो बिना पूछे ये सारे स्टॉप कर देता. So you can see the uses of what if parameter more. It's a very important tool and you can use where you are running this blindly like all services and like all processes. So you should keep this thing in mind. This PowerShell is very strong some part. So you cannot run any command without thinking it. You have to plan it first, see what could be the outcome and then apply it. Let me tell you, suppose if I'm using a command like a, let me open a notepad. Suppose if I run a command like a get mailbox, right? And suddenly I want to filter out with the where object. The mailbox should have more than 10 MB of size. And now I want to move those mailbox. So here pipeline helps us. Suppose first we identify how many mailbox, then we can filter out them those whose are have more than 10 MB of size, and then we can move it. So now you understand the uses of pipeline and how we can apply and how we can take help from it. तो आप देख रहे हो कि get mailbox कमांड से सबसे पहले हम सारे mailbox पुल करेंगे, फिर हम उन्हें filter out करेंगे कौन से 10 MB से ज़्यादा बड़े हैं और उनको move करेंगे. तो यहाँ हम जब जितने भी different कमांड यूज़ करेंगे उसके बीच में pipeline लगाएंगे, तो pipeline की importance से uses को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. चलिए चलते हैं वापस shell पे. Yeah. If I run a command like get command where verb is out, right? See, there's a command out default, out file, out greed, out host, out null, out printer, out string. So see, as I already told you, the out default is using with a default. Whenever I run a command, the output you have seen that is using a out default name already. If I want to use it in some other way, suppose I want to put, if I want to use a out file, what will happen? Let me type it. If I run, okay, let's use a get command and apply a filter out. Okay, and then use out file and c colon commands dot txt. Okay, what will happen? Okay, let's see, type c colon command dot txt. What is wrong? What is wrong? It's a type command. See, all the commands are saved in that file.
लेट मी प्रेस कंट्रोल सी, तो आपने देखा कि जो भी कमांड थी सारी उस फाइल में सेव हो गई। तो आउट फाइल भी सेम वही काम कर रही है, आउट डिफॉल्ट भी वही काम कर रही है, बट इनमें बहुत सिमिलर सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सिमिलर सा, या let me type a command like help with a, which command earlier we use, command verb out. Okay, there's a multiple command, there's a command name is out printer. Let's take a help and understand more about this command. You can see to use this command you need to provide a name of a printer, input object is available, and let's see the example of this command. Okay, so like you can put a get command, then path and readme notification, and you can mention the out printer. Okay, also if you type anything, then put a name. The printer name is you have to put, because without providing a printer name or it's already configured somewhere in a console, you can use it. So you have to mention a printer name if you want to use it anywhere. Let me tell you how it works. Like if I run a command गेट प्रोसेस, मतलब जब तक मैं प्रिंटर नेम कहीं पे मेंशन नहीं करूंगा, प्रिंटर कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, ये कमांड नहीं चलेगी। सिर्फ आई रन अ कमांड लाइक गेट प्रोसेस एंड देन आई टाइप अ आउट प्रिंटर, I have to mention here a printer name like HP, Canon, anything or something. 20 1010 something like that. So there's a different models. So you have to use this parameter with this out printer command. Let's see, and I hope now you have understand the uses of pipeline, how it helps us, and in a different scenario you can use it. It will really help you if you want to write a big script. मतलब पाइपलाइन आपको पावरशेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसी से आप मल्टीपल कमांड्स को जोड़ के एक लंबी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे और इसको और डीपली हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट आउटपुट and write host. Okay, let me type it. So let's see what is the difference in a write output and write host. Okay, if I type a write output like hello, अब हम देख रहे हैं कि राइट आउटपुट और राइट होस्ट बहुत ही सिमिलर सी लगने वाली है, दो कमांड है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों कमांड मैंने चलाई और दोनों ने मेरे को आउटपुट दे दिया। ठीक है, the right output worked in a pipeline where the end it provided result in a out default। तो अब आप समझिए जो आउटपुट कमांड है वो आउट डिफॉल्ट में ही रिजल्ट देती है। ठीक है, बट वेयर एज द राइट होस्ट कमांड डज नॉट यूज अ आउट डिफॉल्ट, सो इट राइट डायरेक्टली इनटू अ कंसोल। मतलब राइट होस्ट कमांड जो है डायरेक्टली कंसोल में लिखती है, बल्कि राइट आउटपुट यूज करती है आउट डिफॉल्ट पैरामीटर का। आप समझ रहे हो कि आउटपुट कमांड, जो राइट आउटपुट कमांड है वो आउट डिफॉल्ट के साथ पाइप्ड है, वो एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहे हैं। जो भी ये देगा उसमें आउट डिफॉल्ट में जाएगा, फिर कंसोल पे आएगा, बट राइट होस्ट इट इमीडिएटली राइटिंग आउटपुट इनटू योर कंसोल। लेट मी टेल यू हाउ यू कैन सी द डिफरेंस। या if I'm like write output, fine, then a golden word hello, a big icebreaker, तो हमने हेलो लिखा है, मतलब कभी कभी किसी अजनबी से मिलना हो तो सबसे बड़ी आइस ब्रेकर है ये। ऑब्जेक्ट डॉलर अंडरस्कोर डॉट and type a length as a operator, and it should be greater than 100 and then close the bracket and let's enter it here. It's strange why it's not showing me output here. Suppose if I write a command like write output hello, but in this scenario
So why it's not showing a result? Because write output command using a out default. So when I type write output then hello, and after that I put a where object filter out. So there is a 5 character simple string word, and in a filtration, if I'm trying to see the length of greater than 100, it will filter out. It will not provide me output. तो इस कमांड में आप देख रहे हो कि राइट आउटपुट में मैंने हेलो लिखा जो कि 5 करेक्टर का सिंपल स्ट्रिंग आउटपुट है। लेकिन जैसे मैंने फिल्टर लगाया वेयर ऑब्जेक्ट का कि जो भी जिसकी लेंथ 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट उस फिल्टर आउट में वो हट गया। तो अब इस वेयर ऑब्जेक्ट में आउट डिफॉल्ट को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो there will be a no output if I'm using write host in a same command. Okay, let me type write host hello, then pipeline where object dollar underscore dot. See why it's showing me result? Because when I type a write host hello, it directly write into the console. तो आप अब आप राइट आउटपुट और राइट होस्ट का डिफरेंस समझ गए होंगे. Let's see what we have covered in this. So in this video, we have covered what is pipeline, what understanding of pipeline services, and how we can use this pipeline, and what is the difference between a write object and write host. Thank you so much. If you like my video, please share it, comment it, like it, and if you want any improvement, please feel free to give your feedback. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें. आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छे वीडियोस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए बनाऊं तो प्लीज़ को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.